we are watching, I said that iron ore needed for iron steel industry, and we need coal as an energy for thermal power plant, and then we are having a coking coal, and use of coking coal, it is for giving strength to steel, giving strength to steel. Understood? These two things are okay in your mind? Means energy through the thermal power plant, huh? Iron ore, coal. If I say that iron ore and coal, these are the major one, for producing 1 kg steel, I need 2 kg iron ore. अभी आपने देखा था 60 to 72%, मीन्स 1 kg में से मुझे 600 ग्राम क्या मिलेगा? स्टील, आयरन वी कैन बी एबल टू, एंड देन तो मुझे 1 kg स्टील प्रोड्यूस करने में 2 kg आयरन ओर लग रहा है, बट आई नीड व्हाट इज आई सेड दैट 100 kg ऑफ कोल और मोर देन दैट ऑन एन एवरेज. तो मुझे सबसे ज्यादा क्या लग रहा है? कोल और आयरन ओर टू प्रोड्यूस 1 kg कोल. सो यदि मैं कहीं पे इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करूंगा तो कोल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ कोल विल बी मोर. सो आवर इंडस्ट्री शुड लोकेट वेयर देयर कोल इज मोर और नियर बाय आयरन ओर आल्सो. अंडरस्टूड? बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट? एनर्जी. Understood? So, therefore the most of the industries are located where it is an iron ore and coal is there. Clear? Next factor is, I said that manganese. And manganese is similar to coking coal. Yes? Use of manganese is similar to coking coal, means giving strength to steel, giving strength to steel, giving strength to steel. And thereafter I said, and this manganese is required very less in amount, so it can be established away from the manganese. It is not necessary to. And then there is what I said that limestone. And the limestone, I said that it passes through the two processes in the iron and steel industry. Calcium carbonate is being heated through calcination process. Which process I said that? In the calcination, 2 A are there. It means absence of air. A for first A means absence, second air means A means air. So this calcination process in the absence of air heating, और एक और process होता है in the, I said that metallurgy, it is roasting, but in this one presence of air. So when I will heat it, it will give a calcium oxide plus carbon dioxide, and this calcium oxide is utilized in what? Removing impurities. And then in the calcium oxide और आयरन ओर में impurities are silica. You know that? हमने बताया था कि मैग्मा में क्या है? Silica and iron. If the iron is there, then along with the major content is what? Silica. Yes, granitic magma में क्या बनता है? It takes longer years towards solidify, and slowly, perhaps you remember, सबसे hydrothermal vein में क्या बनता है? Aluminum, and then I said that copper. Thereafter we have been able to see there is a zinc, manganese. Yes, याद है? And then we have seen silver, and thereafter I said that iron ore, lead, and then platinum, gold, platinum, uranium in the granitic magma. And then most of the time you will see impurities is what I said that silica. So iron ore and limestone का use होता है to remove, and it is able to form slag, that is I said that calcium silicate. ये slag बन गया, and it goes into the rivers, and the river causes what I said, it goes into the nearby rivers, and river get polluted, highly polluted, not polluted, highly polluted, and that is I said that
इकोसिस्टम लॉस, एक्वेटिक इकोसिस्टम लॉस। अंडरस्टूड। लेकिन आज के डेट में दैट इज यूटिलाइज्ड इन दिस स्लैग को लोग क्या यूज कर रहे हैं, इन द सीमेंट इंडस्ट्री एंड मेकिंग roads. We are utilizing in making, I said, the highly utilized in cement industry. Slag को use किया जा रहा है। Clear? तो इसका मतलब we have reduced what? Ecosystem loss of the aquatic ecosystem, that's through the slag. So limestone is for removing impurities. Understood? So these are the major 4 factors. After that, you need water. It means there should be a river, lake, कोई भी चीज nearby होना चाहिए. And the water, you know that if I said that water is for cooling. जब आयरन, हॉट आयरन निकल गया होता है, उस आयरन को मुझे क्या करना होता है, ठंडा. So the water required for making it cool. So therefore it is a cooling purpose. And then so what are the other factors after iron ore and coal? Manganese, limestone, and then we have been able to see water as cooling. Thereafter we are watching, like I said, that ट्रांसपोर्टेशन. एंड ट्रांसपोर्टेशन में हमें क्या देखना है, हमारे यहाँ मैक्सिमम रोडवेज, दैट इज एन, आई सेड दैट नेशनल हाईवे, यस और नॉट, रेलवेज, यही ज़्यादा डेवलप्ड है. अंडरस्टूड. अदरवाइज वी हैव सीन अर्लियर, हम लोगों ने वाटरवेज वी हैव डन, नेशनल वाटरवे 1 to नेशनल वाटरवे 6, national waterway on the Ganga river, Haldia to Allahabad to Haldia, and the national waterway 2, it is from Sadia to Dhubri. National waterway 3 in Kerala, Kottapuram to Kollam, and then in the national waterway 4 in Andhra to Tamil Nadu, that is Kakinada to Puducherry, and national waterway 5, that is the Jiyonkalli Paradip side. Thereafter we have seen national waterway 6 on Barak river, Lakhimpur to Bhanga. So national highway, railways और nearby ports, ये हमारा होना चाहिए nearby, so that we can be able to have national highways, railways. Understood? और क्या चाहिए? What is the other requirement for industrialization? It is cheap labor. We need what? Cheap and skilled labor. और हमारे हिंदुस्तान में यही एक खासियत है, यहाँ पर चीप एंड स्किल्ड लेबर मिल जा रहे हैं. हाँ? और जापान में अब उल्टा हो चुका है, वहाँ के जितने भी चीप लेबर थे पॉपुलेशन, अब वो एजेड पॉपुलेशन में कन्वर्ट हो चुके हैं. अंडरस्टूड? वहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ वर्किंग ग्रुप हैज reduced. So these are the major 7 factors. Which are the 7 major factors for the integrated steel plant? First, iron ore, coal. Coal का use किस में जाता है? As a thermal power plant for producing energy and coking coal for giving strength. Then manganese, limestone. Manganese for giving strength, limestone for removing impurities through the calcination process. And then we have been able to see water for cooling, and then transportation and labors. So अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि first I said that Tata Iron and Steel Company, TISCO, and then
1907 at Kulti. It has been established. And here we have Jamshedpur or Tata Iron and Steel Plant. That is a Jharkhand. First we are going to see iron ore. Iron ore कहाँ से लेगा? Yes, tell me. First iron ore from बोलाया था ना, मयूरभंज, बादाम पहाड़, गुरु मैसानी, मेघासनी. जहाँ पे आयरन होगा, जहाँ पे सी कोल, वहाँ पे सी लिखूंगा. This region से आयरन from मयूरभंज and from the Nuwa Mundi and Kirubao iron ore. It is clear? Clear? Able to locate? Yes. कहाँ से आयरन ओर ले लिया? थोड़ा सा आप लोगों को हल्का सा कोल रिजर्व आप लोगों को पता होना चाहिए. हल्का सा यहाँ पर पता है रानीगंज कोल फील्ड है. इन वेस्ट बंगाल विच कोल फील्ड? रानीगंज एंड यहाँ पे जाएंगे दार्जिलिंग. विच आर द टू कोल फील्ड्स इन द वेस्ट बंगाल? रानीगंज एंड दार्जिलिंग. एंड इन द झारखंड होल north is full of coal. And then best reason is I said that it is Jharia coal field nearby this. And in the Odisha, Talcher coal field. Which one I said that? Just यहाँ पर क्या है? Talcher coal field in Odisha. And in this region, then the reason I said that Korba Bilaspur. Which one I said that? Korba Bilaspur. So which are the important coal reserve we have seen reason? First, Raniganj and Darjeeling in the West Bengal. Second, I said that North Jharkhand is complete. Jharia is the best one. आपका कराया जाएगा कोल का अलग से. And thereafter we have seen Talcher, it is in Odisha. Korba, Bilaspur in Chhattisgarh. और यहाँ पे पूरा भरा पड़ा है. There is also some other coal reserves are there. Like I said that here it is Singrauli coal field, Umaria, Pench Kanha, Tawa coal field. Okay. And there is also Kamptee coal field in Maharashtra. In Andhra, Singareni coal field. Which is what? Andhra, Tamil Nadu, Telangana में which coal field? Singareni. Which coal field? Singareni. And you know that Visakhapatnam is here. Singareni coal field. And in Maharashtra, Kamptee coal field in the Nagpur. और यहीं पे आयरन ओर देखा था आपने चंद्रपुर एंड गढ़चिरौली. Understood it? And there is an I said that Korba and it is an Singrauli, Singareni, it is Singrauli, Umaria, Pench Kanha, Tawa. Understood? These are the important iron ore, coal reserves are there. But we have to see so many things about it. So iron ore of Jamshed, iron steel industry of Jamshedpur first depend upon what I said that this iron ore from the two regions. याद हो गया? Which are the two regions iron ore is taking? सिंहभूम एंड सिंहभूम में तो वो है इस सिंहभूम में इट इज टेकिंग फ्रॉम मयूरभंज एंड इट इज टेकिंग फ्रॉम आई सेड दैट नुआ मुंडी एंड किरूबा. अंडरस्टूड? देयर आफ्टर कोल एंड देन कोल के लिए ही इज टेकिंग कोल दैट आई एम शोइंग फ्रॉम फॉर द ब्लैक. इट इज इन द वेस्ट बंगाल. आई सेड दैट रानीगंज and nearby Bokaro, Dhanbad, there is I said that Jharia coal field. Clear? Raniganj, understood it? Coal is okay.
Tata Iron and Steel Company. Understood it? याद हो गया आप लोगों को? याद करना बहुत जरूरी है कहाँ पे कहाँ we are taking रानीगंज and Jharia. Another we are watching out. I said that next edition we need to need a manganese, और manganese हम लोग जो देखेंगे manganese we are taking from जोड़ा माइन. मैग्नीज हम लोग जो दे रहे हैं जोड़ा माइन इन क्यूंझार. जोड़ा माइन से कहां से लिया हम लोगों ने? जोड़ा माइन इन क्यूंझार. कैन यू रिमेंबर इन योर माइंड? यस, जोड़ा माइन इन क्यूंझार. दैट इज कंप्लीटली ओके. एंड मैग्नीज का क्या काम है? यू मस्ट बी नोइंग. और साथ में आप लिख भी सकते हो वहां पे. दैट इज गिविंग स्ट्रेंथ टू स्टील. एंड नाउ वी हैव टू सी फ्रॉम वेयर वी आर टेकिंग लाइमस्टोन. एंड फॉर द लाइमस्टोन वी आर टेकिंग इट फ्रॉम, I said that limestone, that is Sundargarh. From which district we are taking? Sundargarh.